हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम सॉल्व कर रहे हैं एपी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ इन एपी द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स इज n and the sum of first n terms is m, then prove that sum of its first m plus n terms is minus m plus n. So यहाँ पे हमें गिवन है sum of first m terms, that is sm is equal to n, and sum of its first n terms, that is Sn is equal to m, and we want to prove that sum of m plus n term, Sm plus n किसके इक्वल प्रूव करना, माइनस m plus n, ये चीज हमने प्रूव करनी है। ओके, सो दो कंडीशंस गिवन है यहाँ पे Sm इज इक्वल टू n। तो Sm का अगर फॉर्मूला बनाए m अपॉन 2 इंटू 2a प्लस m माइनस 1 into d is equal to n. So cross multiplying, so m into 2a plus m minus 1 into d is equal to 2 cross multiply कर देते हैं तो we get 2n. Open the bracket on the left hand side, so 2am plus m into m square, m into minus 1 minus m into d is equal to 2n. So let this equation is 1. Now from the second condition Sn is equal to m, तो Sn का फॉर्मूला n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू m. सो अगेन 2 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वी गेट n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 2m. Open the bracket on the left hand side, so 2an plus n into n is n square, n into minus 1 minus n into d is equal to 2m. So let this is equation number 2. So अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, so 1 minus 2 we get on the left hand side 2am plus m square minus m into d minus 2an plus n square minus n into d is equal to, and on the right hand side we get 2n minus 2m. Okay, now open the bracket, so we get 2am minus 2an, so 2a कॉमन निकाल सकते हैं, 2a into m minus n प्लस m स्क्वेयर माइनस m इंटू डी माइनस, यहाँ से माइनस हो जाएगा, माइनस n स्क्वेयर माइनस n इंटू डी, दोनों में से d कॉमन निकाल सकते हैं, तो वी गेट m स्क्वेयर माइनस m माइनस n स्क्वेयर माइनस n इंटू डी इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड से 2 कॉमन, सो वी गेट n माइनस m. ओके, नाउ 2a इंटू m माइनस n प्लस यहाँ पे m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर को ब्रैकेट में रख लेते हैं, और माइनस m माइनस माइनस प्लस n, तो माइनस कॉमन, वी गेट m माइनस n ब्रैकेट में d इज इक्वल टू 2 इंटू n माइनस m. यहाँ से भी हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं राइट हैंड साइड में, तो माइनस जब कॉमन निकालेंगे सो माइनस 2 अंदर ब्रैकेट में रहेगा m माइनस n. ओके, now simplifying this, so on the left hand side we will apply identity inside the bracket, so 2a into m minus n plus a square minus b square is a plus b into a minus b, so therefore m square minus n square will be equal to m plus n into m minus n minus m minus n सारे के ब्रैकेट में बाहर है d इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू m माइनस n.
सो m माइनस एन कॉमन आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से, m माइनस एन सारी एक्सप्रेशन में से कॉमन, वी गेट 2a प्लस यहाँ पे बचेगा m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू minus 2 into m minus n. Now this m minus n whole term cancelled out. So we get 2a plus m plus n minus 1 into d is equal to minus 2. Now we want to find out the sum of first m plus n terms, that is s m plus n find out करना हमने, s m plus n. So applying the formula for first m plus n terms, so m plus n upon 2 into 2a plus m plus n minus 1 into d. ओके, सो m प्लस n अपॉन 2, देखिए इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी किसके इक्वल है, -2, अभी हमने ऊपर फाइंड आउट की है. सो दिस इज -2. नाउ 2 and 2 cancelled out, so we get equals to minus m plus n. So therefore sum of m plus n terms is equal to minus m plus n. Okay. So the next question is, find the sum of all 11 terms of an AP whose middle term is 30. So यहाँ पे हमें total number of terms given है, total number of terms n is equal to 11. So हम जानते हैं कि if n is odd, number of terms अगर odd हो तो middle term कौन सी हो जाएगी, then middle term will be equal to, it will be equal to n plus 1 by 2th term. So here n is 11 plus 1 by 2. So 11 plus 1 is 12, 12 upon 2, 6. So 6th term will be the middle term. And A6 is given. A6 कितना given है? A6 is equal to 30. Okay. So A6 is equal to A plus 6 minus 1, 5D is equal to 30. Now we want to find out the sum of all 11 terms. We know Sn is equal to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d. So S11 is equal to n is 11 upon 2 into 2a plus 11 minus 1 into d. So from here S11 is equal to 11 upon 2, 2a, 11 minus 1 is 10d. So taking 2 as common, we get a plus 5d. Now 2 cancelled out. So therefore we have 11 into a plus 5d. a plus 5d की हमें वैल्यू पता है, a plus 5d is equal to 30. So 11 into 30 is equal to 330. Okay, so therefore sum of 11 terms is equal to 330. And the next one is, show that the sum of all terms of an AP whose first term is A, second term is B and the last term is C is equal to A plus C into B plus C minus 2A upon 2B minus A. तो हमने sum find out करना है. First term given है, first term A1 is equal to A, second term A2 is equal to B and the last term means L is equal to AN is equal to C. So therefore common difference will be equal to A2 minus A1. So A2 is B and A1 is A. So therefore common difference is equal to B minus A. Now we want to find out the sum of all terms. तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज n फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले. सो n के लिए हम यूज करेंगे a n इज इक्वल टू l, लास्ट टर्म इट इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. l is given c and first term a is a plus n minus 1 into d is b.
So D is B minus A. Now taking A on left hand side, we get C minus A is equal to n minus 1 into B minus A. We want to find out n. So therefore n minus 1 is equal to C minus A upon B minus A. So n is equal to C minus A upon B minus A plus 1. Taking LCM, n is equal to C minus A plus B minus A upon B minus A, or n is equal to B plus C. Minus A plus minus A is minus 2A upon B minus A. So this is the value of n. Now we want to find out the sum of all terms. So therefore Sn is equal to, we can use n by 2 into A plus L. So n is B plus C minus 2A upon 2 already है यहाँ पे into B minus A into A plus L. A is A and L is C. So therefore Sn is equal to B plus C minus 2A into A plus C upon 2 into B minus A. यही हमने प्रूव करना था. Next question is find the sum of first 100 natural numbers. So first 100 natural number कौन कौन से हैं? 1, 2, 3 and so on up to 100. So this forms an AP with first term A is equal to 1. Common difference will be equal to 2 minus 1 is equal to 1. And last term L is equal to AN is equal to 100. Total number of terms is 100. So we want to find out this sum of first 100 natural numbers. So therefore Sn is equal to n by 2 into A plus L. So n is 100 upon 2. A is 1 plus L is 100. So 100 upon 2 is 50. So 50 into 101. So upon multiplication we get 5050. The next one is find the common difference of the AP 1 upon A in comma 3 minus A upon 3A comma 3 minus 2A upon 3A where A is not equal to 0. So we have to find out the common difference. So common difference can be calculated by D is equal to A2 minus A1. Second term minus first term. Second term is 3 minus A upon 3A minus first term is 1 upon A. So here LCM is 3A. So 3 minus A minus 3. 3 and 3 cancelled out. We get minus A upon 3A. A again cut gay. So it is minus 1 upon